The Congress backs the Aam Aadmi Party in its fight against the Delhi ordinance that gave the centre the control over Delhi's civil servants. The Aam Aadmi Party decides to join the key opposition meet after getting Congress's support on the ordinance. AAP MP Raghav Chadha, in an interview to NDTV, says those supporting the ordinance are anti-national. Key opposition meeting in Bengaluru to start on Monday. The second meet after the Patna huddle in June. 24 parties likely to attend the meet to strategize for a united fight against the BJP in 2024. The Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar meets his uncle and NCP patriarch Sharad Pawar weeks after staging a rebellion and splitting the party. The Ajit Pawar camp says that we conveyed that the NCP should be together, while the Sharad Pawar camp says that the rebels expressed regret for the division of the party. Joel to Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, ex-ally OP Rajbhar rejoins the BJP-led NDA, coming a full circle after quitting the NDA in 2019. In an interview to NDTV, Rajbhar says alliance politics are important for survival. Extreme weather events recorded across countries. The first week of July was the world's hottest on record, according to the United Nations. Heat waves in several countries, including Greece, Spain, Italy, and the US. Hello and welcome to NDTV 24/7. I am Priyanshi Sharma. Well, we have lots of political stories lined up ahead for you. After weeks of a standoff, the Congress party announced that it will support the Aam Aadmi Party in its fight against the Delhi ordinance, which gave the centre control over civil servants in Delhi. The Congress is set to oppose the ordinance along with other opposition parties in the parliament, such as the Samajwadi Party, the TMC, DMK, CPIM, JDU, NCP, and the Uddhav Sena. Since the Congress not backing the Aam Aadmi Party up till now was a roadblock for opposition unity, after this support, the Aam Aadmi Party has decided to join the key opposition meeting in Bengaluru that will start on Monday. Almost 24 parties are likely to attend this two-day meeting to discuss a united fight against the BJP in the 2024 Lok Sabha elections. Here's our report. All set for the second opposition show in Bengaluru. After 15 opposition parties huddle in Patna, now 24 opposition parties will be coming together for the second meet. And with Congress clearing its stand on support to the Aam Aadmi Party on the Delhi ordinance, now the Aam Aadmi Party will also join the opposition unity meet in Bengaluru. The party had earlier said that it would boycott all opposition meets until the Congress cleared its stand on the ordinance. हमारा मत हमेशा स्पष्ट था। संघीय ढांचे पर कभी भी कहीं भी कोई हमला हो, वो तमिलनाडु में हो, वो बंगाल में हो या वो दिल्ली में हो, हम उसके खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए इस दिल्ली के अध्यादेश के खिलाफ अपना स्टैंड क्लियर किया है और विरोध दर्ज कराया है। हम कांग्रेस पार्टी की इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। The agenda of this meeting is clear. The meet will discuss a common minimum program and a name for the alliance. The three working groups will be set up. One group to work on the combined programs, the second group to work on the election campaign which starts in August, and the third group on bringing allies together in the election states. Discussions will also take place on seat sharing on the state-to-state basis. आज जो सत्ता में है उनको सत्ता से अलग करें, क्योंकि हर बुनियादी स्तंभ जो है हमारे संविधान की, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं बहुत ही गहरा। तो इसलिए आज ये ज़रूरत है कि जितने लोग अपने इस देश की इस चरित्र को एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य मजबूत करना चाहते हैं, इकट्ठा हो इस काम के लिए। People in the know say that there is clarity among parties that all these efforts and arrangements are for the Lok Sabha elections only. All parties are free to take independent decisions in their respective states. जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2024 है,
उसका मतलब है कि बीजेपी के एक के मुकाबले एक। जिन दलों ने इस पर हामी भरी थी वही दल बुलाए गए थे। हमने बीजेडी को, वाईएसआर को, टीआरएस को, इनको और अकाली दल को, इनको नहीं बुलाया था, क्योंकि इनसे हमारी इस सवालों पर सहमति नहीं बनी। Discussions on combined rallies will also take place at the meeting. After Nitish played driver at the first meet, the Congress will take the lead for this one. The party is also hosting dinner for all on Monday. With Ravi Shanjan, Nayantara Singh for NDTV. Now moving on in a jolt to the Akhilesh Yadav-led Samajwadi Party, a key former ally rejoined the BJP-led NDA. The Suheldev Bharatiya Samaj Party, an influential party among OBC voters in eastern Uttar Pradesh, announced that it will fight the 2024 Lok Sabha elections along with the BJP. The SBSP chief Om Prakash Rajbhar rejoined the NDA after quitting the Yogi cabinet in 2019 and fighting the 2022 UP elections in alliance with the Samajwadi Party. Mr. Rajbhar spoke to my colleague Ankit Tyagi about his switch earlier. Listen in. कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि आप तो जा ही रहे हैं, साथ में और भी बहुत सारे लोग एनडीए के साथ आना चाह रहे हैं, तो क्या जयंत चौधरी से भी बातचीत चल रही है? उनके नाम को लेकर बड़ी चर्चा है, आपकी भी कुछ बातचीत है क्या उनसे? नहीं, हमारी बातचीत नहीं चल रही है। सब लोग बातचीत खुद कर रहे हैं, सब लोग बात करके अपना भविष्य सब लोग तलाश रहे हैं। भविष्य सब तलाश रहे हैं, तो राजभर साहब जो कह रहे थे, तो ये जनता की बात है या अपने भविष्य की बात है? अपनी पार्टी के लिए, अपने पद के लिए ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं एनडीए बीजेपी के साथ, या लोगों के भविष्य के लिए जा रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, जो मोर्चा बन रहा है, चाहे वो विपक्षी एकता हो चाहे जो भी हो, तो उसमें क्या दिख रहा है? अपनी अपनी पार्टी के भविष्य को ही न सुधारने के लिए है। पार्टी रहेगी तभी सब लोग जिंदा रहेंगे, पार्टी सत्ता में रहेगी तभी समाज का भला कर सकते हैं, यही ना चीजें हैं। ऑपोजिशन की भी कल मीटिंग है सर, कल परसों 2 दिन ऑपोजिशन भी मिल रही है, अखिलेश यादव भी वहां पर होंगे ऑपोजिशन की बड़ी मीटिंग में। तो आपको लगता है जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है, इसका फर्क पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा? कोई असर नहीं। विपक्षी गठबंधन में जैसे जो गठबंधन बन रहा है, आप ही अपने सोचिए कि केसीआर जी आकर के कितना वोट यूपी में दिलाएंगे, ममता जी कितना दिलाएंगे, तेजस्वी जी आके कितना वोट दिलाएंगे? किसी की यहाँ कोई संगठन है किसी पार्टी का कि जो वोट दिलाएगा? यहाँ अलग अलग जो दूसरे स्टेटों में जिनका जनाधार है वहां अपना चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन यूपी में कोई असर नहीं है। On the other side, the Samajwadi Party has hit out at Mr. O.P. Rajbhar for breaking its alliance. It said that his switch wasn't surprising and him joining the NDA was only a formality. Listen in. सारे लोग जानते थे कि 6-7 महीने से वो पार्टी के किसी कार्यक्रम वगैरह में नहीं आ रहे थे। उन्हें अपने मंत्री बन के रहना है तो किसी तरह सरकार में रहना होगा, तो अपने व्यक्तिगत हित के लिए चले गए, तो ये उनका विषय है। इसका समाजवादी पार्टी, समाज या पीड़ित शोषितों के हित, न्याय अन्याय से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो पहले ही ओम प्रकाश राजभर जी को चिट्ठी लिख के फ्री कर चुके कि आपको जाना है तो आप जाइए, और जो एक मन के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। आप जानते हो ओम प्रकाश राजभर जी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। राजनीतिक जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों से 1-2 लोग इधर उधर आते जाते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ भी आएंगे, 1-आध लोग उधर चले गए हैं, तो एक औपचारिक घोषणा मात्र है। हम लोग तो पिछले 7-8 महीने से कह रहे थे कि वो लगातार इधर उधर राजनीतिक बहाने बना के भारतीय जनता पार्टी के दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमको एंट्री मिल जाए। From politics in Uttar Pradesh, let's now go across to the politics in Maharashtra, where the Deputy Chief Minister Ajit Pawar visited his uncle and NCP patriarch Sharad Pawar just weeks after staging a rebellion against him and joining the Eknath Shinde-led BJP government. The meeting came a day before the commencement of the monsoon session of the Maharashtra Assembly, and after the meeting, the Sharad Pawar camp confirmed that the rebels expressed regret over the division of the party. On the other side, the Ajit Pawar group, even after splitting from the party led by Sharad Pawar, said that they went to seek his blessings. Listen in to what the leaders of the two groups said. आज यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली, तो हम
श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। आज राष्ट्रवादी में से जो चुन के आए हुए 9 विधायक जिन्होंने भाजपा और शिंदे गुट के सरकार में जाके शपथ ली, वो आज पवार साहब को अचानक मिलने को आए। बाद में मुझे बुलाया गया। उन्होंने पवार साहब से दिलगिरी व्यक्त की है, जो भी घटना हुई माफ़ी मांगने की दिलगिरी व्यक्त की है और उन्होंने विनती की है कि ये सारा जो कॉम्प्लिकेशंस हुआ है उससे आप मार्ग निकाले, कुछ रास्ता दिखाइए। लेकिन पवार साहब ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। Time for a short break now. News continues on the other side. Do stay tuned. Welcome back. Some relief from floods in several parts of Delhi. The Yamuna water level is gradually receding and it has fallen by around 3 meters from the record high level of 208.66 meters that it had hit on Thursday. Though it's still around the danger level of 205 meters, and several areas in Old Delhi and Mayur Vihar are still inundated, as you can see in those visuals. Even there's waterlogging in Rajghat, some waterlogging near ITO as well. But as the water level is falling, questions over what caused the floods are rising. Thousands lost their homes, but all they're getting is the classic blame game in return. The BJP says that the Aam Aadmi Party government didn't spend enough on urban planning and infrastructure. While on the other side, the Aam Aadmi Party has alleged a conspiracy against the people of Delhi and blamed the BJP governments at the centre and in Haryana for releasing the Yamuna water towards Delhi. Remember, Haryana released around 2 lakh cusecs of water every hour for several days, and that was one of the major reasons, and that was the reason pointed out for the floods in the national capital. So I spoke to the Delhi Urban Development Minister and the Health Minister Saurabh Bharadwaj about this issue earlier. Let's listen in. You've been at the ITO barrage and you've been taking care of the gates that had been blocked. So what's the state currently? There's still waterlogging in Kashmiri Gate, Mayur Vihar, Rajghat, Red Fort. Roads are closed, such as the Ring Road in several areas, the main road behind the Red Fort, civil lines. So when will the city really get back to normal? We saw that the city came to a standstill with these crucial routes being blocked. So when will it get back to normal, and what's being done for that? Okay, Priyanshi, first of all, for all your viewers who are based in New Delhi, I just want to tell them that if you talk about all the roads of Delhi, I think not even 1% of the roads are submerged in water. The only areas which have water are, I think, few roads which you have just named, ITO, Rajghat and these areas. Obviously because they are adjacent to the river Yamuna, and because river Yamuna was flowing 3 to 3.5 meters above its danger level, so obviously this water, breached the embankments and it got into these roads. And now as the river is going down, the water is receding. Soon these areas will also be free of water. But yes, vehicles are going on. Vehicular movement is not stopped. I just came from IT only. Yes, there has been a lot of inconvenience to people because it is an unprecedented situation. Delhi saw its last floods in 1978, right, when the
levels of river Yamuna were around 207 meters, but now it was like 208.6 meters. So, Right. and Priyanshi, you also stay in Delhi, you understand that for last 6 days, Delhi did not have any rainfall. You know, we didn't get any rain other than yesterday. And the levels of Yamuna had been continuously rising because water was being pushed into Delhi by Haryana from their Hathni Kund barrage, and the predictions of Central Water Commission also proved wrong. Even the Central Water Commission did not predict that Delhi will get these unprecedented levels of Yamuna. मैं दिल्ली का सांसद हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि 2.5 करोड़ लोग जो दिल्ली की जनता है उनको किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हर चीज़ में हाथ खड़ा कर देते हैं, हर मुद्दे पे हाथ खड़ा कर देते हैं, हर कलामिटी में हाथ खड़ा कर देते हैं। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा और रोज़ पूछा जाएगा कि 9 साल में आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा खर्च किया। देखिए, आप अपील दिल्ली सरकार को तो कर नहीं सकती, क्योंकि इतने सालों से अपील ही कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को अपील ज़रूर मैं कर सकता हूं कि जिस तरीके से ज़मीन पे उतर के, रोड पे उतर के मेहनत कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे करते रहिए, क्योंकि दिल्ली को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिर्फ सांसद की नहीं, सिर्फ बीजेपी की नहीं, हम सब एक दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी है और हम आगे भी इस तरीके से काम करते रहेंगे। But even as this political blame game continues, thousands of people who lost their homes in the floods are forced to live on the road and on footpaths. With no stable access to clean water and food there, and exposure to the Yamuna water mixed with sewage, insects and even snakes, the displaced people are facing several health risks. Here's a report. Five-year-old Gudiya has been ill for the last 3 days. Gudiya's family used to live in the Yamuna Khadar area, but flood has forced them to live on the road in Mayur Vihar. क्या हुआ है बच्चे को और कब से तबीयत खराब है? 3 दिन हो गए इसकी तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं किस लिए दिक्कत हो रही है। हम लोग टंकर का पानी पी रहे हैं। अब पानी तो ऐसे गंदा नहीं है, लग तो रहा है सही। अब चाहे पानी से हो या बाढ़ को जैसे हो, अब हमें लोग को तो खुद नहीं पता। In the Mayur Vihar area, many people are falling ill, including more than 100 families living on the roadside. 36-year-old Shivakumar has been suffering from a cough for the last 3-4 days, due to which he has chest pain. आपको कब से शिकायत हुई और अभी क्या दर्द हो रहा है आपको? 11 तारीख से जब से बाढ़ आई हुई है, तो उसी दिन, जिस दिन से सामान निकाला है, उस दिन से दिक्कत आ रही है। खांसी आ रही है, जुकाम है और सर दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रही है। ये चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। और ये दर्द शुरू हुआ जब पानी आप निकाले, पानी से निकाले हुए हैं। जब से आपको क्या दिक्कत हुई, क्या दिखाने आई आप? मेरा दर्द है यहाँ गले में। कब से हो रहा है? मेरा कल से हुआ है। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? अभी इन्होंने दिखाया आपने? अब दवाई दे रहे हैं, कह रहे हैं दर्द दिया, देख चेक करा। According to doctors, there has been a rise in the number of patients suffering from fever, cough and viral infection in the last few days. ये पेशेंट्स जनरली वो थे जो फ्लड के कारण गंदगी के कारण जिनको अलग अलग टाइप की चमड़ी की बीमारियां, डायरिया, गला खराब और बॉडी एक, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, इन टाइप की बीमारियां हो गई थी। हमने 100 पेशेंट्स का हमने करीब दवाइयां दी। अब वो हम वहाँ से ख़त्म करके अब हम यहाँ पे मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे आ गए हैं। In Delhi, where the water level of the Yamuna is decreasing, the risk of diseases is increasing among the flood-affected people. Doctors said that this problem may increase in the coming days. With Ashwini Kumar Singh, Osama Shab for NDTV. And there are floods in North Bengal too. The West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee tweeted that the TMC government is sending a high-level disaster management team to flood-hit North Bengal under the Irrigation Department and including Secretaries of Disaster Management, Irrigation and Agriculture. She tweeted that North Bengal districts have received heavy rainfall, rivers have swollen,
Roads have been disrupted, properties have been damaged, and people have been marooned. DMs and SPs are doing relief and rescue works on war footing with the help of the NDRF and the SDRF. And she says that I've been monitoring personally and instructed my CS to supervise the field situation round the clock. And Mamata Banerjee also said that no stone will be left unturned. And as India is witnessing extreme weather events from heat waves to heavy rainfall and floods in several states, the situation is similar across countries. There are extreme temperatures and rainfall in several countries. In fact, the United Nations declared that the first week of July was the hottest week on record for the entire planet as a whole. So let's tell you about the countries witnessing extremely high temperatures. In the United States, heat waves are stretching from California to Texas. California's Death Valley is expected to hit 54 degrees Celsius. Not just in the US, there are heat waves in Greece, Spain and Italy as well. The temperatures are so high that there are wildfires across Croatia and Spain. And in Rome, the temperature is likely to hit 40 degrees Celsius. Temperatures on the Italian islands of Sicily and Sardinia are set to hit 48 degrees Celsius. In Greece, the monumental complex Acropolis has been closed as there's a forecast of the temperature there crossing 44 degrees Celsius. Now let's go to Japan, where several parts are expected to hit 39 degrees Celsius, while torrential rainfall has already killed 11 people in the country. Now moving on, there's some relief from skyrocketing tomato prices. The centre is selling tomatoes for 80 rupees per kg from Sunday as against 90 rupees per kg earlier. There's been a decrease in the wholesale prices of tomatoes due to this intervention of the government to sell tomatoes at this concessional rate at several locations in the country where the prices were exceptionally high. But importantly, till now, wholesale prices have fallen while retail prices are still around 100 rupees per kg in several states. The sale at this concessional rate has started at several locations in Delhi, Noida, Lucknow, Kanpur, Varanasi, Patna, Muzaffarpur and Ara till now, and it will be expanded to more cities from Monday depending upon the prevailing market prices at those locations. That's all we have for you on this show. Thanks very much for watching. News continues on the other side.